પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના પવિત્ર સાનિધ્યમાં આજથી શ્રાવણ માસના 30 દિવસીય શિવોત્સવનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. તો શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ ભજન, ભોજન અને ભક્તિનું કેન્દ્ર બનશે, જ્યાં વિદેશ દેશ લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ભોળાનાથ શિવજીના દર્શન અને જાપમાં લીન થશે. સોમનાથ ટ્રસ્ટે શ્રદ્ધાળુઓનો આરામ અને સુવિધા માટે બહુસ્તરીય વ્યવસ્થા કરી છે, જેથી દરેક યાત્રિકોને પ્રેમપૂર્ણ આતિથ્ય પ્રાપ્ત થાય. આજે શિવોત્સવના પ્રારંભે પ્રથમ ધ્વજારોહણ સોમનાથ ટ્રસ્ટના સચિવ યોગેન્દ્ર દેસાઈના હસ્તે કરવામાં આવનાર છે, જે શ્રાવણ માસની શરૂઆતનું પ્રતીક બન્યું છે. તો શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભગવાન સોમનાથની બિલ પૂજા, મહામૃત્યુંજય યજ્ઞ અને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો ભગવાન શિવને ઓમ અને પુષ્પના શૃંગારથી સજાવવામાં આવશે, જે શ્રદ્ધાળુઓને દિવ્ય અનુભવ પ્રદાન કરશે. આ ઉપરાંત મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય વાતાવરણ સર્જવા ભજન કીર્તનના કાર્યક્રમો પણ યોજાશે. તો આ શિવોત્સવ દરમિયાન સોમનાથ મંદિર શ્રદ્ધા, આસ્થા અને સંસ્કૃતિનું અનુપમ સંગમ બનશે. તો ટ્રસ્ટના પ્રયાસો અને શ્રદ્ધાળુઓની ભક્તિ શ્રાવણ માસની આ પવિત્ર यात्राને यादगार बनावશે. आज जैसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग श्रावण मास को माना जाता है, तो जो लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा को मानते हैं वो लोग का जो श्रावण मास है वो 15 दिन पहले शुरू होता है, यानी गुरु पूर्णिमा से. और जो अमावस्या से अमावस्या का जो मानते हैं मंथ को, उस हिसाब से आज से ये श्रावण मास शुरू हुआ है. श्रावण मास की महिमा तो अखाध लिखी हुई है शास्त्रों में. तो आज हमारे सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग में आज श्रावण मास के निमित्त सबसे पहले भगवान की महापूजा ब्राह्मणों द्वारा संपन्न हुई. बाद में भगवान शिव जी की सबसे पहली ध्वजारोहण सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा. उसके बाद में 1.25 लाख बिल्वपत्र का पूजन शुरू होगा. उसके बाद में पालकी यात्रा शुरू होगी. और जो हम पाग पूजा करते हैं, पाग पूजा की विशेष रूप में इस बार सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था की गई है, जिसकी पालकी यात्रा की जाएगी और भक्तजनों को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही साथ में महामृत्युंजय यज्ञ विश्व कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का आरंभ होगा, जो पूर्ण मास तक चलता रहेगा. और सबसे बड़ी बात कि छोटे से दान दे के भक्तजन उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं. आज विशेष श्रृंगार क्या होगा? पूरे माह में विशेष श्रृंगार का क्या आयोजन? जिस तरह से श्रावण मास में अलग अलग रूप से हमारा एक भगवान सोमनाथ जी की कृपा से प्रत्येक दिन का अपना श्रृंगार निश्चित होता है, उसी हिसाब से आज पहले दिन भगवान का ओम स्वरूप, क्योंकि भगवान शिव जो है वो प्रणव रूप में सबसे पहले परब्रह्म जो है वो ओम स्वरूप है, और भगवान शिव का आज सबसे पहला श्रृंगार जो है वो ओम से शुरू होगा. और ऐसे प्रतिदिन अलग अलग बिल्वपत्र श्रृंगार, रुद्राक्ष श्रृंगार, ऐसे बहुत सारे प्रकार के श्रृंगार निश्चित है, जो आप सब भक्तों के लिए दर्शन के लिए भगवान सोमनाथ जी की कृपा से सबको प्राप्त होंगे. બ્યુરો રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.